वेलकम टू एसओएमपी। आज के बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है गिलगित बल्तिस्तान एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो आइए देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। रिसेंटली पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को एलिवेट करके एक फुल फ्लेज प्रोविंशियल स्टेटस देंगे। So India has slammed Pakistan for this attempt to accord provincial status to this Gilgit-Baltistan region, and also India has said that कि Pakistan का intention behind this action is to camouflage, that is, to hide the illegal occupation of the region which is being carried out by Islamabad. Also, India has firmly rejected the attempts which is being made by Pakistan to bring out material changes in this region, which is under Islamabad's illegal and forcible occupation, and has asked the neighboring country, that is Pakistan, to immediately vacate such area. So now let us see कि ये गिलगित बल्तिस्तान region है कहाँ पे and what is an issue regarding it. This whole region which you can see it over here, which is shaded in blue, is Gilgit Baltistan region, which is an Indian territory, which is a part of an Indian territory. Over here it's China and this is Pakistan. So this is another most. This is being occupied by illegally occupied by Pakistan right now and is being administered by Pakistan. So this region, which is Gilgit-Baltistan region, which you can see it over here, is the northernmost territory which is being administered by Pakistan, which provides the country only territorial frontier with China. That is the ये इकलौता रीजन है जो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना से थ्रू अ लैंड रूट। सो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ के लोग चाहते क्या है एक्चुअली में। These people have been demanding since years that it should be made a part of Pakistan, since they don't feel any connect with Indian people or with India. So they belong to several non-Kashmiri ethnicities and इनके बहुत सारे they speak in इनके बहुत सारे different languages हैं जिनसे वो बात करते हैं and none of them are Kashmiris. सो दे वांट टू बी, इनका बेसिक डिमांड ये है कि उनको पाकिस्तान का पार्ट बना दिया जाए। सो नाउ लेट अस सी कि व्हाट वाज एन इंटेंशन behind behind this move for Pakistan. So the plan to grant Gilgit-Baltistan provincial status gathered speed over the last 1 year. पहले से ही ये चल रहा था एक्चुअल में, बट लास्ट 1 ईयर से ये प्लान पेस अप हो गया। द पुश हैव वेलकम फ्रॉम इंडियाज assertion फॉर इट्स क्लेम आफ्टर August 5, 2019, दैट इज जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ इंडिया ने किया था, in which India was made and in which the Article 370 was abrogated from the Indian Constitution, and India Jammu and Kashmir is made as a integral part of India, making and इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। So Pakistan is doing this due to its internal politics and basically the pressure from China. So pressure of China, because if this region is completely integrated in Pakistan, तो चाइना के पास मोर एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी और कंट्रोल हो जाएगा ये रीजन में। ऑल्दो 1960s में पाकिस्तान ने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है एक पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रीजन टू चाइना, विच इज नाउ नोन एज सक्शम वैली। This region, which you can see it over here, which is shaded in yellow, this area is ceded to China by Pakistan. इसी को सक्शम वैली कहते हैं। So also CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor, which is a part of Chinese ambitious BRI project, that is Belt and Road Initiative, or passes through this region of Gilgit-Baltistan, and तभी इसी region से China is trying to have control to Arabian Sea. देखिए, this whole region is Pakistan. अगर ये connect किया जाएगा through CPEC, तो चाइना के पास कंट्रोल होगा पाकिस्तान में भी, और साथ ही साथ यहाँ पे अरेबियन सी है, तो इस पे भी कंट्रोल आ सकता है चाइना का। सो द इंटेंशन बिहाइंड चाइना इज टू हैव अ कंट्रोल ऑन दिस रीजन एज वेल। सो नाउ लेट अस सी इंडिया का क्या स्टैंड रहा है रिगार्डिंग द एक्शन टेकन बाय पाकिस्तान।
So India has held that government of Pakistan और its judiciary के पास कोई local stand ही नहीं है on the territories which is being illegally and forcibly occupied by them. So India has completely rejected such action and continued attempts to bring material changes in the Pakistan occupied area, that is the Gilgit-Baltistan area, which is an Indian territory of Jammu and Kashmir. While protesting the Islamabad's efforts to bring material changes in Pakistan occupied territory, इंडिया ने ये भी कहा पाकिस्तान को कि they should immediately vacate all the areas जो उन्होंने illegally occupy किया है और जहाँ पे illegal occupations हो रहे हैं. So this was the stand which is being taken by India. So now let us see कि ये जो region है गिलगित बल्तिस्तान region, why is it so important? कि पाकिस्तान भी इसको चाहता है कि ये इनका पार्ट बन जाए. इवन चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान for this thing, for this status, for the actions which has been taken by the Pakistan right now. And साथ ही साथ why इंडिया के लिए ये रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है. So let us see that. फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पॉइंट. ये जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान रीजन, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं. K2 इज हियर, लोकेटेड हियर. बहुत सारे ग्लेशियर्स है, ग्रीन प्लेन्स भी हैं. बट मेजरली ये जो रीजन है इट हैज अ सिग्निफिकेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक पॉइंट. सो गिलगित बल्तिस्तान इज अ होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंटेंशियस स्ट्रेटेजिक पॉइंट which is capable of creating unremitting embroilment and fracasses. Leading of war. Gilgit-Baltistan's geostrategic importance is multifolded. In case of two-front war, that is from Pakistan and China, India to become the most critical point of warfare, capable of drastically affecting and determining the outcome. So इसलिए ये region बहुत important है to counter this two-front war. वॉरफेयर के लिए भी मतलब वॉरफेयर के लिए भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज हाई एल्टीट्यूड पॉइंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विद एस्पेक्ट टू वॉरफेयर. सो विच कैन इफ अगर प्रॉपरली एक्सेस किया जाएगा तो इट कैन बी प्रूव्ड एज अ बिग गेम चेंजर. This region is very important for countering China as well. This region is a key to the destruction of Chinese influence in the South Asian region. It is actually known as a string of China Pakistan pearl necklace, and it is also the Brahmastra of India against China. So, India, if they are controlling the Gilgit Baltistan region, it can turn out to be the worst nightmare for China and eventually Pakistan के लिए भी. these strategic points के अलावा और warfare के अलावा भी इसके बहुत सारे significance है ये region की. That is economic significance. The economic significance is of this region is embedded in its vast hydroelectric potential. यहाँ पे बहुत ज़्यादा hydroelectric potential है. ये region है. So it is a home to Indus and its six tributaries. There are hundreds of glaciers and lakes. It includes world's second and the third longest glaciers, which outside the polar region. यहाँ पे they are rich in water resource region which has a potential of generating almost 40,000 megawatt of hydroelectricity. So economic significance बहुत ज़्यादा है यहाँ का. Also economic epicenter of trade. ये region जो है it is a gateway to Afghanistan, Tajikistan and the rest of the Central and the West Asian countries. So region of Gilgit-Baltistan is a potential economic epicenter of trade. So due to all these importance, these reasons, ये बहुत ज़्यादा important है इंडिया के लिए and that is why it should never be occupied by Pakistan. सो नाउ लेट अस सी कि इंडिया को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान का कंट्रोल इस एरिया पे कम हो जाए या बल्कि खत्म हो जाए. सो पाकिस्तान एक्चुअली क्या हो रहा है वहां पे. पाकिस्तान इज चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ दिस रीजन विच इज क्लियरली अगेंस्ट द यूएन रेजोल्यूशन विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूरिंग 1950s में शिया की पॉपुलेशन ये रीजन में ऑलमोस्ट 80% थी एंड नाउ इट इज स्टूड अराउंड 30% ओनली. This clearly shows that Pakistani atrocities in this region. So there is a complete demographic takeover of this region by Pakistan. So India need to support the separatist element of this region by covert support. India should spread the news about this region and brutality which is being affected by Pakistan with the support of China. इंडिया ऑल्दो इंडिया को ये हैंडल करना चाहिए अकेले
But it should also have a talk with like-minded countries to tackle this issue. More communication programs should be taken in this conflicted region. There is also a threat of dual front war with China and Pakistan. And if it happens, then India has to reshape its security doctrine. We have to build our own capacities and capabilities. Hame, that is India, need to build its military capability along with the close cooperation of like-minded countries. सो ये थोड़े बहुत मेजर्स हैं इफ इंडिया कैन एड्रेस टू सच मेजर्स देन ये जो इशू है रिगार्डिंग द पाकिस्तान ऑक्यूपेशन इन दीज रीजन्स ये थोड़ा टैकल किया जा सकता है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल लाइक द वीडियो डू कमेंट ऑन इट ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं विच इज @SOMP गाइडेंस फॉर फर्दर अपडेट्स थैंक यू